in East UP's Sonbhadra. Here's a report from India's thermal power hub, where accessing simple, clean drinking water remains a pipe dream. The UP election will move towards Sonbhadra in the eastern part in 2 weeks. But voting isn't really uppermost on the minds of many villagers in one of the states and India's most backward areas that is also the country's thermal power hub. Instead, it is this daily struggle for drinking water that is the predominant issue for thousands of women who are forced to trek many kilometers each day in search of what is a basic necessity. This village, Bodhradar, just 10 kilometers away from the Sonbhadra airstrip, has never had a single hand pump for groundwater or any water supply since independence. The village has 150 families, 800 residents, many of them voters like Leelavati in her 40s, who has spent the last 2 decades here and has to do this 3-kilometer trek each day for water. But this is not the end of Leelavati's woes or those of others. The closest water source is this large dam, Rihand or Govind Ballabh Pant Sagar, constructed in the 60s. But multiple power plants have been built around the dam, and activists say the discharge from these plants has made the water very poisonous. तो 1.5 किलोमीटर पर डे आते हैं, पर डे जाते हैं। दिन भर में कितने बार आते हैं? 3 बार 4 बार पानी हो जाता है लेके जाने में। यहाँ से सुबह आएंगे, कोई ज्यादा मेहमान आ जाते हैं, फिर पानी तो भरे पड़ता है हम लोग को बहुत। जाए साथ तो कोई यहाँ पे कोई सुविधा नहीं देता, तो प्रधान है तो प्रधान सुविधा कुछ नहीं देता है। चुनाव में ये देखिए कोई बन जाएगा तो पानी की सुविधा करे तो और अच्छी बात है, नहीं हो पाएगा तो पानी तो डैम में पीते हैं हम लोग। डैम का पानी भी तो ठीक नहीं है, नहीं हो तो क्या करें, कहाँ से पानी पियेंगे। और मैंने एनजीटी में यहाँ के हवा और पानी को लेकर एक जनहित याचिका दायर किया था, और उस याचिका में माननीय न्यायालय ने साफ कहा कि सोनभद्र जो रिहन जलाशय है उसका पानी पूरी तरह से दूषित हो गया और उसके पानी में फ्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, मरकरी आदि भारी तत्व हैं जो जीवन के लिए खतरा है। यहाँ तक कि 2012 में सीएमओ ने यहाँ के जो पानी है इसको पीने के लिए तो मना किया ही, साथ में कहा कि यहाँ की मछली भी खाने लायक नहीं है। चुनाव आया है, 10 तरह के लोग आएंगे, लेकिन इससे पहले जितने भी, ये मामला आज का नहीं है, ये आजादी के बाद जैसे ही रिहन बांध हुआ और लोग विस्थापित सिरोली से होकर यहाँ बसे, उनको बहुत सारे लुभावने सपने दिखाए गए। गर्भवती महिलाएं आप गांव में देखी होंगी, वो गगरी लेके पानी और डब्बा लेके 1.5 किलोमीटर पानी लेने आती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस सोनभद्र का क्या होगा। Sonbhadra has 1378 villages and a 20 lakh population. At least 24 villages do not have a single hand pump, and there is a water problem in many others. The district has 4 assembly seats, 2 of them reserved for scheduled tribes. All 4 are currently held by the BJP and its allies. The area's rocky terrain is one reason for water scarcity. But there is no shortage of government projects, at least on paper. In November 2020, Prime Minister Modi launched this massive project under the Har Ghar Nal scheme to provide tap water connections in 3,000 villages of Sonbhadra and adjoining Mirzapur. But that milestone is still months, if not years away. Another 30 state government-run drinking water schemes are operational in Sonbhadra. But there is another issue. Many villages in the district are on forest land, and an ownership tussle between the government and villagers has gone on for decades. The Uttar Pradesh election has seen all kinds of promises related to development being made by various political parties. But the irony is that successive governments over the last few decades have not been able to solve problems as basic as drinking water in Sonbhadra. One hopes that UP's next government, whoever that is, will walk the talk.
With Prabhat Kumar in Sonbhadra and Rajesh Gupta, this is Alok Pandey, NDTV.